Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 3rd January. The session will be quite interesting and important. In this video, students, we will be talking about Mission Mausam. Then we will be talking about Great Place to Work certification, which company earned it. Then we will be talking about what is the rank of India if we are talking about rapidly aging societies. Then we will be talking about Save the Linka, that is recently what we are talking about. It is related to UNESCO, right? Save the Linka, right? So this we will be discussing about it. Then we will be talking about the trends and progress of banking in India. Next thing, we will be talking about the financial stability report. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, monthly current affairs, weekly current affairs, and topic wise they are uploaded regularly. That will help you in your learning. Also students, very good news, some people from our family, they have secured some positions in government jobs, right? And in the banks, we will be, you can see them here, banking, bakery, and enjoy each moment. Congratulations to both of you. All those students, congratulate them, as well as if you have also secured any position or you have cleared your exam, do let us know in the comment section, right? It will make us also happy, as well as it will motivate the rest of the students who are working hard and who have joined us, right? It will motivate them and give them courage that they can work much harder and also secure some positions for which they are working hard. So congratulations both of you. Hope you have made in your life, and best of luck for your future ahead. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Now let's start with the national affairs students. We are talking about Mission Mausam, right? This Mission Mausam, this is an initiative that has been launched by Ministry of Earth Science, and it has been designed to position India as a world leader in the field of weather and climate. This initiative is aiming that India becomes weather ready and climate smart, right? And here this will be with and make India also in this weather and environment related to the international standards by 2026, right? So this is Mission Mausam, right? This is an initiative that will boost the India's capacity in the weather and climate related sciences. Also under this, 50 Doppler weather radars, 60 radio wind stations, 100 disdromometers, 10 wind profilers, 25 radiometers. These equipments will be installed that will give us better insight about the environment, better insight about the weather and climate of India. Correct? Take a note of this. This is Mission Mausam, right? And it was question can be asked that Mission Mausam was launched by which ministry? It was launched by Ministry of Earth Sciences, right? Then this was approved by the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi in September 2024, and it was launched with a budget of 2000 crore rupees, and it has been launched for the next 2 years. Right, take a note of this. And here you can see, as I mentioned, these equipments will be installed under this that will make sure and give us better data about the environment. Also, this mission is implemented, as I mentioned, by Ministry of Earth Science along with IMD, National Center for Medium Range Weather Forecasting, and IIT that not Indian Institute of Technology but Indian Institute of Tropical Meteorology, right? That is Pune, Maharashtra based. So they will be helping them to achieve this.
Moving on, as I mentioned, the main objective here is to develop cutting edge weather surveillance technologies, to implement higher resolution atmospheric observations, and to implement the next generation radars, satellites with instruments that are updated one, that have new technologies that will help us to build better capacities and also give better insight about the environment. Next is SAIL, that is your Steel Authority of India Limited. They have been awarded with the Great Place to Work certification for FY26. Right, this was given by the Great Place to Work Institute, India. This marks the second consecutive year that SAIL they have awarded with this recognition. Right, previously they received this in December 2023 to December 2024, and now for 2025 to 2026 they have been again awarded with this Great Place to Work certification. Right, this certification talks about an organization's workplace, their work employee feedback, right, their culture there, right, how happy the employees are there, how the work life balance is there in that organization, and so on. Moving on, next remember students, we are talking about India, and we are talking about India in the rapidly aging society, in the rapidly aging society. Right, so recently a study was published and that talks about the nature aging, whereas the rank of India was 123rd among 143 countries. In this we are talking about the challenges that are the challenges that are faced by aging population. Right, in this index of the or in this report or in the list of the rapidly aging society, where India's rank was 123rd, which is the country that secured the first position, it is Switzerland that has secured the first position, followed by Norway on second position and Denmark on third position. Right, currently our country India, it is the youngest country in the world, which has 50% population that is below the age of 25 and more than 65% population that is below the age of 35. Also, this study, it was conducted by whom? This study was conducted by the researchers from the NUS, that is National University of Singapore, and New York, USA based Columbia University, who are developing new measures for global aging index. Right, and we saw there are 143 countries, so on 143rd position was Rwanda. Right, here you can see Rwanda ranked the lowest in the index, followed by Togo, Afghanistan, Benin, and Malawi. Correct, take a note of this. See, one more thing you need to understand from here is that if the country is having young population, right, that means the demand for jobs in that country should be high, because the young population will be looking for better job opportunities, right, and there is a high chance also that economy will grow. That is the reason our country India is heavily betting in order to grow the SMEs, MSMEs, in order for job employment, focusing on manufacturing, focusing on Make in India initiatives, and so on. Right, moving on. Next is one more thing, we are talking about the Global Hunger Index. Right, this was the 19th edition of this Global Hunger Index that was released, and India, our country, was ranked at 105th position in this index. This was published by Concern Worldwide and Wealth Hunger Life. That is your Global Hunger Index. That was the 19th edition of this index. Moving on, next is we are talking about UNESCO's recognition. Right, this is UNESCO's recognition for what? Right, so recently Save the Linka, right, this is a melancholic and ancient love song from Bosnia and Herzegovina, and it was recently added to the UNESCO's international or intangible cultural heritage. What is this intangible cultural heritage? Intangible is something that you cannot touch, right? Tangible is something you can touch. For example, a monument, right? A monument is something tangible that you can touch, but culture, right, or you can say some songs, right, these are something related to culture that are intangible, you cannot touch it. Right, so recently Save the Linka, that is Bosnia's Balkan Blues, they have gained the UNESCO's recognition in the intangible cultural heritage. This recognition to them will ensure their tradition is safeguarded and celebrated both nationally as well as internationally. And this Save Lanka, this is a song. Right, these songs, it date back to 16th century and referred to as the Balkan Blues due to their emotional depth and soulful melodies. Correct, take a note of this, directly remember. Moving on, here you can see if we talk about some other intangible cultural heritage element, Navroz in 2004 given this recognition. Then Garba of Gujarat, right? Garba is a dance
of Gujarat that was given the recognition of intangible cultural heritage in 2023. Then Durga Puja of Kolkata, West Bengal, Kumbh Mela, yoga, right? Similarly, they were given the recognition of intangible cultural heritage. Moving on, next we are talking about RBI. They have released a report on the trends and progress of banking in India. Right. So recently this report was report on trends and progress of the banking in India for 23-24. Right. This data, right, it represents the performance of the banking sector that includes your commercial bank, cooperative banks and non-banking financial institutions. If we look at the data, according to this report, the profitability of the commercial banks in India increased for the sixth consecutive year for FY24. The banks, they witnessed a return on asset of 1.4% and return on equity of 14.6% in FY24, with profitability remaining robust in the first half of FY24. The report also showed that the bank's gross non-performing asset ratio, or the proportion of the bad assets or total loans. What is this NPA? Non-performing assets are the money that has been given to as a loan or to some individual or organization, but they have defaulted or they are not able to pay back that money, right? That is your non-performing assets or your bad assets, right? So it has declined to a 13-year low of 2.5% at the end of September from 2.7% at the end of March 2024, right? That means the NPAs are decreasing somewhere. Apart from this, if we talk about this, banks we just saw, it saw a decline and the net NPA fell to 0.57% of the total loan in September from 0.62% at the end of March 2024. Apart from this, CRAR, that is your capital risk to weighted asset ratio of the scheduled commercial banks, was 16.8% in September 24, with the Bank Groups meeting and the regulatory minimum requirement and the common equity tier 1 ratio requirement, right? So similarly, remember this capital to risk weighted asset ratio for the scheduled commercial banks was 16.8% at the end of September 2024. Moving on, next is RBI. They have released the financial stability report for December 2024. If we talk about this report, here you need to understand is something that is your financial stability, right? We know that in India the loans are increasing, right? The personal loans are increasing. People are going for the loans for buying or for day-to-day use also, right? Coming back, just have a thought about this in your back of the mind when we are discussing this report released, right? This shows the assessment of the subcommittee of the Financial Stability and Development Council that talks about the potential risks of the financial stability in the India's financial system, right? This is because of both international and domestic economic conditions, whereas the scheduled commercial banks, the non-banking financial companies, right, they are giving, or the NBFCs or your various private companies, private banks, they are giving loans to the individuals that can be fatal in the long run. It is also expected that here we discussed about, right, the non-performing asset, it is somewhere declining, right? But in the coming future, right, there is a high chance that this NPA can increase because the loans that were given to various individuals, those were collateral free loan, right? If the people will be not able to pay back that loan, right, and there is no collateral taken against that loan, so it will become very difficult for that bank to sustain also, right? In future we can see a financial instability in our country where the huge amount of loan that was given to the individuals will not be able to be paid back by them, and it will lead to various economic crises in our country, right? If we talk about this financial stability report, this is a biennial report that is released by RBI. This is released twice. This is, as I mentioned, it is a biennial report. It is released twice, in the month of June as well as in the month of December, right? If we talk about this report, the Indian economy is demonstrating strength and resilience. Thus, it has projected that India's GDP will be at 6.6% in FY25. Also, the asset quality of the scheduled commercial banks improved further, with their gross NPA declined to a 12-year low of 2.6% in September 2024. Apart from this, also remember the report highlighted that the unhedged external commercial borrowings reached at $65.49 billion. That is an increase of 34.4% of the total debt under this avenue. Next is RBI's new guidelines, that is closure of dormant, inactive and zero balance account from 1st of January 2025. First of all, you need to understand these three terms, right? What is considered a dormant? A dormant is an account that have not seen any transaction or activity for continuously 2 years or more. Also, inactive accounts have remained inactive for 12 months or longer will be closed unless reactivated by the account holder, right? So these are your banks. Now, if we talk about them,
the news is that RBI, they have issued the new guidelines from 1st of January 2025 that mandates the closure of three types of banks, that is your dormant account banks, inactive accounts, as well as the zero balance accounts, right? This move will enhance the banking security, it will reduce the fraudulent activities and also improve the overall efficiency in the banking operation, right? So these three types of bank will be removed, closed. Also, if you want to avoid the closure of these accounts, you need to reactivate the inactive account, you need to engage with the dormant account, that is to visit the branch to reactivate the account that has been dormant for 2 years and maintain a positive balance, that should not be zero for a long time. Correct. Apart from this, recently RBI, they have released new rules for the fixed deposits, right? So these new fixed deposit rules have been came, or these RBI, they have introduced these new guidelines for the fixed deposits for these NBFCs and housing finance companies that will come into effect from 1st of January 2025 only. Here, for the small deposits that are up to 10,000 rupees, the depositors can withdraw the entire amount within 3 months of depositing without any interest. For larger deposits, that the partial or we can say for larger deposit that is more than the 10,000 rupees, partial withdrawal of up to 50,000 50% of the principal amount or 5 lakh rupees, whichever is lower, will be allowed to withdraw within the 3 months of the fixed deposit without any interest. Also, in case of any critical illness, the depositors can withdraw the entire principal amount prematurely without any interest, regardless the deposit term. Right? Next is awards and recognition. Haryana, if we talk about it, Karnal students honored by NASA for asteroid discovery. So 12 students and 2 teachers from Dayal Singh Public School in Karnal, Haryana, they have been honored by NASA's International Astronomical Search Collaboration for the discovery of a main melt asteroid TD40 found using the data from Penn Stars telescope operated by the Institute for Astronomy at what location? It has been at your University of Hawaii in USA. So directly remember the students from Karnal, Haryana, that are 12 students from the Dayal Singh Public School that is in Karnal. They have been honored by the NASA for an asteroids discovery. Right? Take a note of it. Next, we are talking about appointments. Sanjeev Ranjan has been appointed as the Secretary General of IORA. What is IORA? IORA is your Indian Ocean Rim Association, right? He will be succeeding whom? He will be succeeding Salman Al Farisi of Indonesia. Right? This question can be also asked that Sanjeev Ranjan will be succeeding whom? He will be succeeding Salman Al Farisi. Right? His term will be of how many years? He will be in this position for the next 3 years. This position will be starting from 1st of Jan 2025. Correct? Then Sanjeev Ranjan, he joined IFS, that is Indian Foreign Service, in 1993 and has since established a distinguished diplomacy career. Next, if we talk about Indian Ocean Rim Association, IORA, it was established in 1997 and this is an intergovernmental organization. Let me show you here. It comprises of 23 member states. These are the member states here, and 12 dialogue partners. These are the dialogue partners here. Next is Vitul Kumar has been appointed as the Director General of CRPF. CRPF is your Central Reserve Police Force, right? And he will be succeeding whom? He will be succeeding Anish Dayal Singh. Take a note of this. Vitul Kumar, remember, he is a senior IPS officer from Uttar Pradesh cadre and is currently serving as the Special Director General of the CRPF. Moving on. One more thing, remember, he was also honored with the President's Police Medal on 26th of January in 2021 as well as with the Police Medal in 2009. Next, we are talking about some CCI approvals, right? CCI, that is your Competition Commission of India. They have approved the following commissions. First is your acquisition stake of Hyderabad, Telangana based 4th Partner Energy Limited, that is India's leading renewable energy company focusing on building and financing renewable energy projects that are jointly developed by Washington DC based International Financial Corporation, a member of World Bank Group, Asian Development Bank and Deutsche Investors and Company. Right? This is your first approval. Second is Virginia, USA based Mars. They have incorporated Mars to acquire all outstanding equity shares of Chicago, USA based Kellanova, a Delaware corporation listed on New York Stock Exchange for $36 billion.
Third thing, remember, third thing is the acquisition of 72.89% of the voting share capital in Indore, Madhya Pradesh based Pratap Snacks Limited. By whom? By Autham. Right? Autham, this is a non-banking financial company registered with RBI. Right? Take a note of it. Next is your environment, students. We are talking about the discovery of a new species of Stellaria in WB. WB is your West Bengal and named as the Stellaria bengalensis, right? So it has been named as to honor the West Bengal, right? This new species of Stellaria was discovered where? It was discovered in West Bengal only, and it marks the second Stellaria species that has been discovered in 2024. Next, as you can see him in the picture here, a Sanskrit scholar, Dr. Pierre Sylvain, right, has recently passed away. He passed away at the age of 88 in Paris, France. He was born in France only, right? He was a very famous French Indian Sanskrit scholar and a Padma Shri awardee. He was honored with Padma Shri in 2024 for his efforts to promote Sanskrit, right? Take a note of it. Next is books and authors. Legendary former Indian cricketer Syed Mujtaba Hussain Kirmani has released his autobiography that is Stumped, Life Behind and Beyond the 22 Yards. I repeat, Stumped, Life Behind and Beyond the 22 Yards. This is the name of the autobiography authored by Syed Mujtaba Hussain Kirmani. He is a former Indian cricketer and he has released his autobiography. Right, this book will be published by whom? It will be published by Penguin Play. Next is Ministry of Defense. They have declared the year 2025 as the year of reforms. This is important and it is one of the most important current affairs for this video. Which year has been declared as the year of reforms, or year 2025 has been declared as the year of reforms by whom? By Ministry of Defense and vice versa. The main objective here for declaring 2025 as the year of reforms is basically for transforming the tri-services where they can become combat ready, and also multiple new technologies, equipments, right, they can be upgraded into the forces. Here, these reforms, they will focus on collaboration with various key defense ecosystems. Reforms would also ensure the welfare of the veterans while using their expertise. Also, these reforms will instill a pride in Indian culture, ideas, promoting confidence and achieving the international accolade. Right? Apart from this, remember, Ministry of Defense, they have also set a target to achieve the defense exports worth 50,000 crore rupees by the year 2029. Moving on, students, next we are talking about is state news. Sikkim has celebrated annual Kagyar Dance Festival at Gangtok. I repeat, Sikkim, they celebrated the annual Kagyar Dance Festival in Gangtok, the city of Sikkim, with great traditional enthusiasm. This festival observed on the 28th and 29th days of the 10th month in the Tibetan calendar, that is December, to honor the 8th tantric deities known as Kagyar. This Kagyar dance, also known as Cham, is a unique Buddhist festival in the state of Sikkim. So take a note of it. Next is, students, Gujarat's Chief Minister Bhupendra Patel has launched SWAR platform on the occasion of the Good Governance Day. Good Governance Day, when do we observe this Good Governance Day? This Good Governance Day is observed on the birth anniversary of former Prime Minister late Atal Bihari Vajpayee ji, and it is observed on 25th of December. So recently, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has launched this SWAR platform. SWAR is your speech and written analysis resource platform, and it was launched on 25th of December. That is your Good Governance Day. Thus, this basically platform will overcome the language barriers and enhance communication between citizens and the government to enhance the governance. This platform will utilize Bhashini. This will utilize Bhashini. This is an indigenous artificial intelligence system that is developed under the National Language Translation Mission by Ministry of Electronics and Information and Technology. This SWAR platform, SWAR platform, right? This will integrate speech to text functionality that will enable the citizens to dictate their messages rather than typing them manually. Right? So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Next, which country has recently signed the final act of the Riyadh Design Law Treaty? So, which country signed the final act of Riyadh Design Law Treaty? It is our India, right? After the negotiations of almost 2 decades,
This treaty has been adopted by the members of World Intellectual Property Organization. This will harmonize and simplify the registration process for various industrial designs. Next, which organization has recently signed an agreement with the India's Ministry of External Affairs to implement solar energy projects in Fiji, Comoros, Madagascar and Seychelles? So, which organization signed this agreement? It is International Solar Alliance, that is ISA, the headquarter of which is in Gurugram, Haryana. Right? Take a note of this. Moving on, which of the following companies has not received the license by RBI to operate as a payment aggregator cross-border entity? So among the following, it is Razorpay. It has not received the license by RBI for payment aggregator cross-border entity. Right? Cash-free payments, Amazon Pay, Aid in India and BillDesk. They have all received this license. Next, in November, World Bank approved dash amount of funding for enhancing the landscape and ecosystem management project in Tripura and Nagaland. What is the name of this project? Element. Question can be asked that what is the name of that project for which World Bank has funded so and so amount for the landscape and ecosystem management in Tripura and Nagaland? It is Element. And vice versa can also be asked that Element project will be implemented in which two states? It will be in Tripura and Nagaland. So how much amount funding has been approved? It is $225.5 million funding has been approved. In this Element project, the target is to conserve and restore 1 lakh hectares of forest and biodiversity. Also, it will prevent 4,35,000 tons of carbon emissions to mitigate the climate change. Next is who has recently become the first Indian to host International Emmy Awards 2024. So, Veer Das, right? He recently hosted the 52nd edition of International Emmy Awards that took place in New York, USA, and he became the first Indian to host this event. Next, which platform has recently partnered with Urban Company to empower women salon and beauty parlor owners? So, Women Entrepreneurship Platform, right? They partnered with Urban Company and they are recently empowering the women salons and beauty parlor owners. Next, name the campaign that was launched by the Union Minister Annapurna Devi to eradicate child marriage and empower the young girls in India. So name of that campaign is Bal Vivah Mukt Bharat, right? This launch coincides with the 16 days of activism against gender-based violence. Also, this event marked the launch of Child Marriage Free Bharat portal. The aim of this campaign is to reduce child marriage below to bring that the total number of child marriage below 5% by 2029. Right? And under this law, it is prohibited to get a girl married under 18 years of age and boys under 21 years of age. Next, Union Minister Dr. Jitendra Singh has announced the selection of 8 startups to support DASH and the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System. So what is it? It is National Quantum Mission. Even if you remember, a chip Willow has been launched by Google and it is expected it will be one of the most advanced and important chip that will be used in large amount of computation or large processing where it is required, right? And it will be a game changer for AI. Next, where was the India-Singapore bilateral military exercise Agni Warrior held from 28th to 30th of November? So where was this held? It was held in Maharashtra, right? It was from 28th of November to 30th of November, and this was the 13th edition of this joint military exercise held in Maharashtra. Next, name the portal that was recently launched by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution that will enable the consumers to file their complaints. It is e-Dakhil portal, right? And it was first introduced on 7th of September 2020 by the National Consumer Dispute Redressal Commission. It will provide efficient and convenient way for the customers to approach the relevant consumer forum, right, and file for their grievances. Next, which bank has recently signed an MOU with MasterCard Impact Fund to enhance MSME
financing across the Asia Pacific region. So, which bank has signed this MOU? It is Asian Development Bank, that is ADB, and this will help to enhance the MSME financing. Right, under this partnership, MasterCard, they will give $5 million to the financial institution that will boost the lending in the MSMEs. And this grant will help to unlock $1 billion in Asian Development Bank financing for a period of 4 years. Next, Hemant Soren was sworn in as the Dash Chief Minister of Jharkhand. This marked Hemant Soren's dash term as the Chief Minister of Jharkhand. So Hemant Soren was sworn in as the 14th Chief Minister of Jharkhand, and this marks Soren's 4th term as the Chief Minister of Jharkhand. So right option is option 2. Next, who has been recently elected as the 11th President of Asian Development Bank? So Masata Kanda has been appointed as the 11th President of Asian Development Bank. He will be succeeding whom? He will be succeeding Masasugu Asakawa. Next, from which submarine Indian Navy recently tested the K4 nuclear capable ballistic missile? So it is INS Arigat, from which our Indian Navy has tested this K4 nuclear capable ballistic missile. This K4 will have a range of 3,500 km. It is an upgraded version of the K-15 missiles that were used on INS Arihat. And this INS Arigat, remember, this is India's second nuclear-powered ballistic missile submarine. Next, for which year India has recently got the hosting rights for the Asia Rifle Pistol Cup? This is for the year 2026. This competition is scheduled to take place in New Delhi in 2026. Also, previously our country India hosted the 8th edition of Asian Air Gun Competition, that was in 2015, and the Asian Olympic Qualifier in 2016. Next, which organization has recently signed an MOU with Research Society for the Study of Diabetes in India to advance quality and consistency of diabetic care in India? So which is that organization? It is National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. This MOU will leverage the distinctive capabilities of NABH to drive national quality certifications and accreditation programs in developing best practice clinical guidelines for diabetes management and research. Next is 18th edition of NCB International Conference and Exhibition on Cement, Concrete and Building Materials, held from 27th to 29th of November in New Delhi. Who received this NCB Lifetime Achievement Award in recognition of his exceptional contributions to the cement and concrete sector? So Dr. Nani Gopal, I correct, no, Dr. H.C. Viswarya, right? Dr. H.C. Viswarya has been awarded with the NCB Lifetime Achievement Award in recognition of his contribution to cement and concrete sector. The theme of the conference during which this award was presented is Cement, the Net Zero Future. Next, exercise Sinbex. This is a joint tabletop exercise held between Indian Army and it is held between the Cambodian Army. Right, where was this held? Location, it was held in Pune, Maharashtra. Right, so this is between Indian Army and Cambodian Army. The exercise Sinbex, that is a joint tabletop exercise. This was this exercise, remember, in this question can be asked that where was this exercise held? So it was held in Pune, Maharashtra, and this exercise Sinbex had 20 personnel from both sides, and from Indian Army it was infantry brigade, from which we saw these 20 personnels. Next, according to Niti Aayog's report, that is India's booming gig and platform economy perspectives and recommendations of the future work, it was published in June 2022. The number of gig and platform workers is expected to increase to 23.5 million by what year? By FY 2030. Right, the gig force workers will constitute 6.7% of the non-agriculture workforce or 4.1% of the total livelihood in India by
FY 2030. As per the estimation of the report, around 7 million that include women were engaged in the gig economy in 2021, which constituted 2.6% of the non-agriculture workforce, and it is expected that from 2.7 or 2.6% in 2021 it will increase to 6.7% in 2030. Also, this data report suggested that by 2030, it is expected that this gig sector has a potential to create 90 million jobs, and it will contribute 1.25% of the GDP. Next, in November, India was re-elected to the UN Peacebuilding Commission for the dash term, consolidating its position in global peace efforts. So, India was re-elected to the UN Peacebuilding Commission for 25-26, and this is for positioning in global peace efforts. Correct? Take a note of this. Next is, to which country Russia handed over the BRICS chairmanship in the final Sherpa and Sous-Sherpa meeting of BRICS held in Russia in November. So Russia handed over the chairmanship of BRICS to Brazil, and Brazil was also the second BRICS country who opposed against the Belt and Road Initiative of China. Next, students, is our homework section. First, tell me recently, if I ask you, who has been appointed as the new governor of Manipur and Bihar? Tell me, for both Manipur and Bihar. Second, who has been appointed as the new revenue secretary in finance ministry? Third question, tell me who has been appointed as the chief executive officer of DBS Bank. Right? Easy question. If you have paid attention to today's video, you will be able to solve it. So that's all for the day, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिशन मौसम के बारे में। देन हम बात करेंगे ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। देन हम बात करेंगे रैपिडली एजिंग सोसाइटी के बारे में। देन हम बात करेंगे एक सॉन्ग को अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का रिकॉग्निशन मिला बाय यूनेस्को, वो कौन सा सॉन्ग है उसको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे हमारे जो ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस है बैंकिंग इंडस्ट्री में इंडिया की, उसको डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके। एंड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी न्यूज़ है, हमारे फैमिली में से काफ़ी सारे बच्चों, जो हमारी एक यूट्यूब की फैमिली है उसमें से काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे क्लियर किया है अपना एग्ज़ाम, राइट, बैंक का एग्ज़ाम। उसमें से हमें 2 बच्चों के यहाँ पे कमेंट देखने को मिले, बैंकिंग बेकरी एंड एंजॉय ईच मोमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, आपका सिलेक्शन हुआ है, राइट। एंड मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो और अच्छे से अचीव कर सकें, राइट। फुलफिलिंग आपकी लाइफ हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर स्टूडेंट्स, राइट। एंड ये बाकी बच्चों के लिए भी बहुत मोटिवेशन का काम करेगा, जो बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं हमारे साथ, राइट। उनका भी एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बस अपनी मेहनत को ख़त्म मत कीजिए, कम बिल्कुल मत होने देना। नया साल है, नए साल के साथ और ज़्यादा हमें डबल मेहनत करनी है, जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes
are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर नेशनल अफेयर। हम बात करेंगे मिशन मौसम की। मौसम क्या है? ये एक बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा, जो हम इंडिया को वेदर एंड क्लाइमेट, राइट, हमें क्योंकि हमें देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर हम बोलें तो सबसे पहले अगर सिंपल टर्म्स में देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हमारा बहुत मदद कर सकता है, वेदर का डाटा, क्लाइमेट का डाटा, राइट। एंड इसको हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए 2026 तक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि इंडिया भी एक ग्लोबल लेवल पे स्टैंड कर सके इन द फील्ड ऑफ वेदर एंड एनवायरनमेंट, राइट। वेदर और क्लाइमेट का डाटा यही नहीं, बाकी और चीज़ों में भी बहुत यूज़फुल रहता है, करेक्ट। एंड इसके गैदर करने के लिए हमें कई सारी टेक्नोलॉजीज़ की भी ज़रूरत होती है, कई सारे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया की कैपेसिटी को बढ़ावा देगा इन वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस एंड सर्विसेज, जिसके लिए हमें 50 डॉपलर वेदर रडार्स, 60 रेडियो विंड स्टेशंस, 100 डिसोमीटर्स, 10 विंड प्रोफाइलर्स, 25 रेडियोमीटर्स, एक अर्बन टेस्ट बेड, एक प्रोसेस टेस्ट बेड, तो ये इक्विपमेंट्स भी सेटअप करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद वेरियस सैटेलाइट्स, जिससे हम प्रॉपर डाटा गैदर कर सकें एंड उस डाटा की बेसिस से हम एक बेटर यहाँ पे एनालिसिस भी फर्दर प्रोवाइड कर सकें। इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा IMD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, इनके द्वारा मिलकर इस मिशन मौसम को आगे फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सिंपल एम है कि हमें इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाना है इन वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेस टू वर्क। यह भी सर्टिफिकेशन दिया गया सेल को, एंड दिस इज़ फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। ये ग्रेट प्लेस टू वर्क ये दर्शाता है कि सेल का जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो वर्क कल्चर है वहाँ पे, राइट, जो टीम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे लोगों को काम करने में मज़ा आता है, वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट, एंड उनके कल्चर से बहुत अच्छा वहाँ पे एक कल्चर बनाया जाता है जिससे लोग खुश रहते हैं एंड लोगों का जो एम्प्लॉयज़ का भी फीडबैक है वहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे, देखो एक चीज़ याद रखेंगे, अगर किसी भी कंट्री में एजिंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो एजिंग पॉपुलेशन ना वो क्या है, ओल्डर लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, राइट। इंडिया में अगर हम देखें हमारी कंट्री में तो जो यंग जनरेशन है ना 50% ऑफ द इंडिया की जो पॉपुलेशन ना वो एज 25 से हमें नीचे देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम 35 साल तक की बात करें तो 65% ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है। तो ये क्या है, ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यंग पॉपुलेशन होगी तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी जॉब मार्केट में, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी तो जो हमारी इकोनॉमी में की डेवलपमेंट है ना वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो यंग पॉपुलेशन होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहीं पर अगर ओल्डर पॉपुलेशन होगी तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी यंग पॉपुलेशन पे। ज़्यादा ओल्डर पॉपुलेशन होगी तो वो जॉब मार्केट में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिया के पास काफ़ी यंग पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें रैपिडली एजिंग सोसाइटी की तो इसमें एक डाटा रिलीज़ किया गया नेचर एजिंग का, राइट, जिसमें बताया गया हमारी इंडिया 123rd पोजीशन पे आ जाती है आउट ऑफ 143 कंट्रीज़, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें किस चीज़ में कि इंडिया की या फिर जो एजिंग पॉपुलेशन है वो क्या क्या चैलेंजेस उससे हमें देखने को मिलते हैं किसी भी इकोनॉमी में। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आ जाता है नॉर्वे और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क इस इंडेक्स में, राइट। एक और चीज़, ये जो डाटा है ये स्टडी है किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, रिसर्चर्स फ्रॉम द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क USA बेस्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इन्होंने मिलकर ये ग्लोबल एजिंग इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज़ किया एंड 143 कंट्रीज हैं, तो लास्ट पोजीशन पे आ जाता है रवांडा। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, राइट, कि कितना हमें किसी भी कंट्री में हंगर देखने को मिला, बड़ा है कम हुआ है वो सारी चीज़। ये डाटा रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड वाइड एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। इसमें बात करें तो इंडिया की पोजीशन आ जाती है 105th पोजीशन पे। आपका होमवर्क रहेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन किसकी रही, राइट। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सॉन्ग की जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अभी घोषित किया गया, उनको ये
ICH इंटरनेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का रिकॉग्निशन बना है यूनेस्को के द्वारा। तो सॉन्ग का नेम है सेव द लिंका, राइट। ये सॉन्ग का नाम है, ये बॉस्निया का सॉन्ग रहेगा। इसको बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसको यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से अभी रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी मॉन्यूमेंट की बात करूं, जैसे ताजमहल की बात करूं, तो ताजमहल को आप टच कर सकते हैं, तो वो हो गया टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या हो गया? मान लो ताजमहल पर कोई सॉन्ग बना, उस सॉन्ग, वो एक सॉन्ग इस ताजमहल का पार्ट है, बेसिकली एक कल्चरल पार्ट है, तो वो सॉन्ग जो है वो आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, राइट। तो ऐसे ही जो ये सेव द लाइन का ये सॉन्ग है, राइट, जिसको बाल्कन ब्लूज के नाम से जानते हैं फेमसली, इसको अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से रिकॉग्निशन मिला है फ्रॉम यूनेस्को। एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें इसके अलावा, जैसे नवरोज़ 2024 में इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का रिकॉग्निशन मिला। देन इंडिया से गरबा को फ्रॉम गुजरात, गरबा क्या है? एक डांस है गुजरात में। देन दुर्गा पूजा कोलकाता वेस्ट बंगाल में, पूजा है ये, राइट। ये एक तरीके से बेसिकली आपका फेस्टिवल है, कल्चर है, राइट। इसको आप टच नहीं कर सकते, आप इसको फील कर सकते हैं, आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? इंटेंजिबल है। जैसे कुंभ मेला 2017 में इसको दिया था, योगा को 2016 में, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई ऑन द रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 23-24 के लिए। अगर हम इसकी बात करें, ये डाटा बताती है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक्स की वो बढ़ती हुई दिख रही है। जो हमारे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें हमें गिरावट दिख रही है, राइट। कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जा रही, बट एक अनसेड ट्रूथ देखने को हमें मिल रहा है कि बैंक्स के द्वारा, प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, राइट, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा का लोगों को बहुत सारा लोन भी दिया गया है, अनसिक्योर्ड लोन भी दिया गया है। अब उस अनसिक्योर्ड लोन से क्या हो रहा है? वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज जो अनसिक्योर्ड लोन है कोलेटरल फ्री दिया गया है, एंड उसके बदौलत काफ़ी सारा पैसा ऐसा है जो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं ये बैंक्स एंड ये इंस्टीट्यूशंस, जिससे वो उनके बैलेंस शीट में दिख रहा है, एंड इट कैन लीड टू अ ग्रेटर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन आवर कंट्री अगर ऐसी तरीके से लोन देते रहे। कमिंग बैक, अगर हम बात करें ट्रेंड एंड प्रोग्रेस की ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो प्रॉफिटेबिलिटी है कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, इट इंक्रीज फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉर FY24। जो रिटर्न ऑन एसेट की बात करें वो रहा 1.4% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रहा 14.6%। वहीं पे अगर मैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो की बात करूँ, एनपीए की बात करूँ या बैड एसेट्स की बात करूँ, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला ऑफ 13-year लो ऑफ 2.5% एट एंड ऑफ सितंबर फ्रॉम 2.7% एट एंड ऑफ मार्च 2024। वहीं पे अगर मैं बात करूं सीआरएआर की, सीआरएआर क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये 6.8% था बाय द एंड ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, एफएसआर की। ये दिसंबर की रिलीज़ की गई, 2 बार बाइनली इसको रिलीज़ किया जाता है इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को, राइट। आरबीआई के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें 2 बार कब कब, एक तो अभी दिसंबर में रिलीज़ किया गया, और इससे पहले कब रिलीज़ किया गया था? वो जून में रिलीज़ किया गया था। अगर इस रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट कवर करती है बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस को फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फॉर एनबीएफसीज, राइट। एंड ये रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है ना, दे आर स्ट्रेंथनिंग बाय स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे अभी हमने देखा था कि जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उस एंड जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखती हुई दिख रही है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें हमें गिरावट होती हुई दिख रही है, राइट। ये एक अच्छा संकेत है हमारी इकोनॉमी के लिए। ऑल्सो जो ये रिपोर्ट है ये असेस करता है फाइनेंशियल सिस्टम की रेजिलियंस को, दर्शाता है कि हमारा सिस्टम जो फाइनेंशियल सिस्टम है काफ़ी रेजिलियंट है एंड स्टेबल हमें देखने को मिल रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही अभी आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा इन FY25। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई फॉर द क्लोजर ऑफ डॉर्मेंट, इनएक्टिव एंड जीरो बैलेंस अकाउंट। देखो ये तीनों पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जीरो बैलेंस हो गया जब आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है, आप उसमें पैसा नहीं डला हुआ काफ़ी टाइम से। इनएक्टिव एंड डॉर्मेंट क्या हो गया? डॉर्मेंट अकाउंट है कि 2 साल से उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन की एक्टिविटी हमें नहीं दिखी है। एंड इनएक्टिव अकाउंट हो गया कि वो रिमेन इनएक्टिव रहा 12 महीने से या ज़्यादा के लिए, उसमें अकाउंट में खुला भी नहीं गया वो, राइट। तो अगर ऐसी चीज़ें, और एंड थर्ड चीज़ क्या हो गई? जीरो बैलेंस। अगर ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो ऐसे अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से फ्रॉम 1 जनवरी 2025। अगर यहीं पे अगर आपको इन बैंक्स को वापस से रीएक्टिवेट करना है, राइट, तो आपको बैंक में जाके रीएक्टिवेट करना पड़ेगा अकाउंट को, डॉर्मेंट अकाउंट के साथ एंगेज करना पड़ेगा एंड पॉजिटिव बैलेंस यहाँ पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो जाए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। अभी हरियाणा में करनाल स्कूल के स्टूडेंट्स, करनाल में स्कूल है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, वहाँ के 12 बच्चों को अभी यहाँ पे नासा के द्वारा, नासा की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के द्वारा ऑफ नासा यहाँ पे सम्मानित किया गया क्योंकि उनके द्वारा एस्ट्रॉयड की डिस्कवरी करी है, राइट। डिस्कवरी ऑफ अ मेन मेल्ट एस्ट्रॉयड TD40 दैट वाज फाउंड यूजिंग द डाटा फ्रॉम पेन स्टार्स टेलीस्कोप, जो कि ऑपरेट किया गया बाय इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी एट USA, राइट। तो 12 बच्चे हैं ये करनाल स्कूल के। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। स्कूल का नाम क्या रहेगा? दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, जिनके बच्चों को नासा के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मानित किया गया? फॉर द डिस्कवरी ऑफ एन एस्ट्रॉयड जिसका नाम है MBA TD40। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है संजीव रंजन। संजीव रंजन को अपॉइंट किया गया एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA। IORA क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, राइट। इनके यहाँ पे सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया। ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे सलमान अल फरीसी को, राइट। सलमान अल फरीसी ये इंडोनेशिया के हैं एंड ये अभी रिटायर हो जाएंगे, करेक्ट। एंड 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA संजीव रंजन को। 1 जनवरी से इनका टर्म पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2025 से। संजीव रंजन की बात करें तो ये IFS ऑफिसर इन्होंने ज्वाइन किया था 1993 में, राइट। एंड देन ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं, इंडियाज़ एम्बेसडर टू अर्जेंटीना 2016 से 2019 के बीच। अगर मैं बात करूँ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, इसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। 23 मेंबर स्टेट्स हैं यहाँ पर एंड 12 डायलॉग पार्टनर्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ फिक्स डिपॉजिट गाइडलाइंस की, राइट। तो अभी सरकार के द्वारा कुछ नई गाइडलाइंस भी लॉन्च की गई हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए, राइट, जो बताती हैं कि कब हम पैसा निकाल सकते हैं, किस सिचुएशन में लोगों के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 10,000 रुपये तक की यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कराई है तो वो किसी भी अमाउंट पे यहाँ पे 3 महीने के अंदर कभी भी पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर उनकी 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट है एंड अगर वो अपना 50% यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट, या फिर 5 लाख रुपये जोन सा भी लोअर अमाउंट होगा वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं विद इन द 3 मंथ्स, राइट। उनको कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर उनके पास उनको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, राइट, तो वो एंटायर अपना प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट डिपॉजिट का, रिगार्डलेस ऑफ द डिपॉजिट टर्म, वो चाहे कितना ही लंबा उनका डिपॉजिट उन्होंने कर रखा हो, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वितुल कुमार। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है वितुल कुमार। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह को, राइट। एंड एक और चीज़, ये जो वितुल कुमार जी हैं ये IPS ऑफिसर हैं ऑफ उत्तर प्रदेश कैडर, राइट। एंड देन इनको 2009 में इनको प्रमोट किया गया था टू द रैंक ऑफ द DIG, जो कि है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, राइट। इसके अलावा इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था सन 2021 में। इनको पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था 2009 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ अप्रूवल्स पर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एक्विजिशन की बात करी, जो कि है सर्टेन स्टेक ऑफ हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड 4th पार्टनर एनर्जी लिमिटेड, राइट, जो कि इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एंड फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, राइट। इसमें यहाँ पे एक्वायर करा जाएगा किनके द्वारा? बाय IFC, ADB एंड DEG। सेकेंड चीज़ याद रखेंगे, मार्स, जो कि वर्जीनिया USA बेस्ड मार्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ये एक्वायर करेंगी ऑल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ शिकागो USA बेस्ड कंपनी, जिसको फॉर्मली कैलॉग के नाम से जानते थे, राइट, जो कि एक डेलावेयर कॉर्पोरेशन है लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फॉर $36 बिलियन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। हम बात करेंगे नई स्पीशीज़ ऑफ स्टेलेरिया, जो कि अभी वेस्ट बंगाल में डिस्कवर की गई एंड उसका नाम फिर वेस्ट बंगाल के बेसिस पे ही रख दिया, जो कि है स्टेलेरिया बेंगलिनेसिस। तो मार्क करके चलेंगे, ये स्टेलेरिया बेंगलिनेसिस कहाँ डिस्कवर की गई? वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। एंड ये सेकेंड स्पीशीज़ है स्टेलेरिया की, जो 2024 में इंडिया में डिस्कवर की गई है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर पियरे सेल्वेन। इनका रिसेंटली निधन हो गया, पेरिस फ्रांस में ही इनका निधन हुआ। इनका जन्म भी पेरिस फ्रांस में ही हुआ था, राइट, एंड 1936 में इनका जन्म हुआ था। इनका काम जो था वो था बेसिकली, या फिर इनको ऐसे समझिए, ये एक फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर थे एंड संस्कृत के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2024 में। मूविंग ऑन, बुक्स एंड ऑथर्स पर आ जाते हैं। तो लेजेंडरी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी, राइट, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी निकाली है जिसका नाम है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। इस बुक को अपने अभी रिलीज़ किया गया, ये एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक को पेंगुइन प्ले के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, राइट, जो इन्होंने गेम्स खेले हैं, अपना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में इसमें दर्शाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज की वीडियो के लिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया साल 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा कि हमें जो हमारी ट्राई सर्विसेज हैं, राइट, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, उनको अपग्रेड करना है, राइट, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे अपग्रेड करनी है, नए नए इक्विपमेंट्स लाने हैं, राइट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे AI, मशीन लर्निंग, राइट, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, इन सब का यूज़ हमें करना है, करेक्ट। एज वेल एज अगर हम बात करें, इनके द्वारा एक और टारगेट सेट किया गया है कि हम 2029 तक जो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट है उसको 50,000 करोड़ तक हम ले जा सकें। इसका ये टारगेट भी इनके द्वारा सेटअप किया गया। ये कौन है पिक्चर में? राजनाथ सिंह, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम बात करेंगे सिक्किम के द्वारा सेलिब्रेट किया गया एनुअल कग्यार डांस फेस्टिवल। कहाँ पर? गैंगटॉक में इसमें सेलिब्रेट किया गया। 28 एंड 29 डेज ऑफ द 10th मंथ ऑफ द तिब्बतन कैलेंडर में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। केगडार डांस, जिसको हम छम के नाम से भी जानते हैं, ये एक यूनिक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। कहाँ पे? सिक्किम में इसको ऑब्जर्व किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा स्वर प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे हम 25 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, राइट। उनको ऑनर करने के लिए ही ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। एंड इसके गुड गवर्नेंस डे के दिन ही, जो कि 25 दिसंबर को था, स्वर प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के लिए। इसका एम क्या था इस इनिशिएटिव का? ताकि जो लैंग्वेज बैरियर है उसको खत्म किया जा सके एंड कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जा सके बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये है स्वर प्लेटफॉर्म। स्वर क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। भाषिनी का यूज़ करेगा। भाषिनी एक AI प्लेटफॉर्म है, राइट। उसकी मदद से यहाँ पे टेक्स्ट या फिर स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शनैलिटी आएगी, या फिर टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शनैलिटी, दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगी। AI का यूज़ किया जाएगा, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जनरेटिव AI का यूज़ किया जाएगा, ताकि इसको एक सक्सेसफुल बना सके एंड जो कम्युनिकेशन है उसका हमें बैरियर ना देखने को मिले बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में और हेल्प करेगा। रामानुजन प्राइज से सम्मानित करा गया। यहीं पे इनको $10,000 का कैश प्राइज भी मिला है, राइट। एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया होता है, यंग मैथमेटिशियंस को यहाँ पे सम्मानित करा जाता है। नेक्स्ट, किस वेटरन एक्टर को भी ऑनर किया गया 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी? तो कौन है वो है मिथुन चक्रवर्ती, जिनको हम मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं। ये 54th रेसिपिएंट बनेंगे इस अवार्ड के एंड 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान इनको सम्मानित यहाँ पे किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी इनको ऑनर करने के लिए। एंड 2024 में ही मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखेंगे, पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको भी जॉइंटली अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से इन 2024 फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA। माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए भी किनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से सम्मानित किया गया था? वो है गैरी ब्रूस रोवकुन को, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अलॉन्ग विद जॉफ्री E हिंटन, राइट। एंड दिस इज फॉर द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कि मशीन लर्निंग को हम कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कंबाइन करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन रहेंगे? वो है जॉन J हॉपफील्ड अलॉन्ग विद जॉफ्री E हिंटन। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट, इनमें से किनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया? तो तीनों को, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
हॉन कैंग, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला किस कैटेगरी में, तो लिटरेचर की फील्ड में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एंड ये पहली वीमेन बनी है साउथ कोरिया से जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से। एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, ऑल्सो द फर्स्ट एशियन, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड 1930 में इनको भी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर यहाँ पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, वो कौन सी इकलौती आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया 2024 के IACP 40 अवार्ड के लिए। ये अवार्ड दिया जाता है पुलिस की ब्रेवरी एंड कमिटमेंट एंड अच्छे से काम करने के लिए। एंड कौन है वो आईपीएस ऑफिसर, वो है प्रीतपाल कौर। ये इकलौती इंडियन है इन 40 की लिस्ट में जो कि 6 कंट्री से अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे सेलेक्ट की गई एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकेडमी, वो है मुथुवल करुणानिधि स्टैलिन जो कि हैं MK स्टैलिन। ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, तमिलनाडु के। एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इनके जो कमिटमेंट है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरपोर्ट को अभी प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर सोसाइटी फॉर एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स अवार्ड के लिए, करेक्ट। तो किन को सम्मानित किया गया यहाँ पे, वो कौन सा एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद गुजरात में रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री के एनजीओ को अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 के, तो वो है जापान का एनजीओ। क्या नाम रहेगा एनजीओ का, निहोन हिदानक्यो, राइट। एंड इनका जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, ये उनका एक बेसिकली उन लोगों के द्वारा ये ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि हमें पीस को प्रमोट करना है एंड न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए, और इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द स्वर्गीज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। इसी को हम नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये है डेरेन एस्मुग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इन द फील्ड या फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जिसको हम स्वेगीज रिस्क बैंक प्राइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किन को अभी ऑनर किया गया 2024 के यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट से, तो वो कौन है, वो है सिस्टर रोजिता मिलेसी। ये 79 एज की हैं, ब्राज़ीलियन नन है, लॉयर हैं, सोशल वर्कर है। एंड इनकी जो काम है जैसे राइट्स, डिग्निटी ऑफ रिफ्यूजीज़, राइट, जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड कराना, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है कि जो माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ब्राज़ील में, उनको उनके राइट तक, उनको उनका राइट दिलाना, राइट, उनके जो भी चीज़ों से उनकी एक लाइफ अपलिफ्ट हो सकती है, उसके लिए उनको राइट तक उनका काम कराने के लिए इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा, और इसीलिए इनको नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द 48th वयालर रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल कटू कडावू, तो किनको सम्मानित किया गया, वो है अशोकन चारुवेल। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बैग किया फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसने टॉप किया, वो है ओडिशा ने। नेक्स्ट, who became the second woman from India and 10th Indian to be inducted into the ICC's Hall of Fame in October 2024, तो सेकेंड वीमेन इंडिया से एंड 10th इंडियन ये बनी। ये कौन है, ये रहेंगी नीतू डेविड, राइट। अभी 3 इंडक्ट किए गए हैं आईसीसी की हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 के लिए, वो हैं आपके एलिस्टेयर कुक 113th पोजीशन पे, नीतू डेविड 114th पोजीशन पे एंड ABD विलर्स आपके 115th पोजीशन पे। नेक्स्ट, किन को अभी A+ ग्रेड मिला इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के लिए, तो ये तीनों गवर्नर हैं कहाँ के, क्रिश्चियन कैटल, थॉमसन जॉर्डन एंड शक्तिकांत दास, तो ये RBI के गवर्नर हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के गवर्नर रहेंगे थॉमसन जॉर्डन एंड क्रिश्चियन कैटल, ये आपके गवर्नर रहेंगे गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ डेनमार्क के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली हम कब ऑब्जर्व किया, हमने बॉक्सिंग डे कब ऑब्जर्व किया। सेकंड, इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया एज द
न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। एंड थर्ड क्वेश्चन, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। होमवर्क्स मैं आपके होमवर्क ज़रूर देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे कितना सीरियस होकर मेरी बात सुनते हैं एंड होमवर्क को अटेंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।